Good morning, students. In today's lecture, I will be discussing about the nutrition in paramecium. In paramecium, the nutrition is holozoic, that is, the organism completely engulfs the food into itself. The food comprises chiefly of bacteria and minute protozoa. Paramecium does not wait for the food but hunts for it actively. As in the previous videos, I have shown you a live paramecium hunting its food by actively throwing the trichocyst and paralyzing its food or prey. It is said that Paramecium shows a choice of selection of its food, but there is no scientific or experimental basis for this. It engulfs certain types of bacteria. The available data suggests that 2 to 5 million individuals of Bacillus coli are devoured by, that is, eaten up by, single paramecium in 24 hours. It also feeds on unicellular plants like algae, diatoms, etc., and small bits of animal and vegetable. The feeding mechanism. When paramecium enters a region of abundant food, it comes to a rest. It feeds only at rest or when it is swimming very slowly. It never feeds when it is swimming fast, as it was evident in the video. The beating of the cilia of the oral groove causes a cone-shaped vortex of food-laden water to be swept into the oral groove from a distance in advance of the anterior end. The particle of the food then goes to the vestibule, from where the food particles are some of the food particles are rejected and thrown out, but the others pass into the cytostome. At the end of the cytopharynx, the food vacuole is formed, which gets filled with particles of food. The quadrules and the paniculi control the passage of food into the food vacuole, which is formed laterally. When the food vacuole reaches a certain size, the post-buccal fiber clasp the food vacuole and it is pinched off by them and started on its course. The vacuole contains some water besides the food. Rotary streaming movement of endoplasm called the cyclosis carry the food vacuole along a definite course, which is functionally equivalent to a digestive tract. The tract begins from the end of the cytopharynx, then to the posterior side, then forward to circulate with the endoplasm.
and then to the dorsal surface. Then it goes towards the anterior end. Then it moves downward towards the cytopage and is ejected out through cytopage. Early on its journey, the food vacuole decreases in size, then it increases again. Digestion and egestion of food in paramecium. During cyclosis, the digestion occurs by enzymes secreted by protoplasm into the vacuole. In digestion, proteins are changed into amino acid, carbohydrates into soluble sugar and glycogen, and fats are also digested. The content of food vacuole are at first acidic, the pH about 4. It then becomes alkaline. Major digestion occurs during the alkaline phase. The undigested food or the matter is egested out of the body through a cytopage with some force. पैरामीशियम में भोजन होलोजोइक प्रकार का होता है, यानी यह संपूर्ण भोजन को अपने अंदर अंतर्ग्रहित कर लेता है। पैरामीशियम एक हेटेरोट्रोफिक प्राणी होता है, यानी वह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता। उनके द्वारा भोजन बैक्टीरिया आदि के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्धारित रहते हैं। वह अपना भोजन बैक्टीरिया, शैवाल, डायएटम, ईस्ट, अन्य छोटे प्रोटोजोआ आदि प्राणी को अंतर्ग्रहित कर प्राप्त करते हैं। पैरामीशियम प्राणी संभोजी जीव होता है। प्राणी संभोजी का मतलब होता है होलोजोइक, यानी संपूर्ण भोजन को अंतर्ग्रहित करने वाला। जिन खाद्य पदार्थों के बारे में पैरामीशियम अंतर्ग्रहित करता है, मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा यह पौधों तथा जंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को भी भोजन के रूप में, यानी सूक्ष्म टुकड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। पैरामीशियम में फीडिंग मैकेनिज्म यानी अशन की विधि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पैरामीशियम संरचना में सबसे जटिल जीव होता है। इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित कोशिका मुख, जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं, पाया जाता है तथा बिना पचे भोजन को त्यागने के लिए कोशिका गुदा यानी साइटोपाइज एक निश्चित स्थान, जहाँ से या छिद्र हम कह सकते हैं, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड शरीर के बाहर त्यागा जाता है, वह साइटोपाइज कहलाता है। तो पैरामीशियम में ये दो निश्चित स्थान या रीजन पाए जाते हैं।
मुख उपकरण पैरामीशियम के अधर पार्श्व सतह पर एक मुख खांच यानी ओरल ग्रूव पाई जाती है, जिसे पेरिस्टोम कहा जाता है। मुख खांच यानी ओरल ग्रूव के पीछे एक नलिकाकार ट्यूब्यूलर मार्ग बनाती है, जिसे प्रघाण यानी वेस्टिब्यूल कहते हैं। प्रघाण फिर एक चौड़ी नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा एक अंडाकार छिद्र द्वारा कोशिका ग्रसनी यानी साइटोफेरिंक्स में खुलती है। इस छिद्र को कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। कोशिका ग्रसनी पीछे की ओर मुड़कर पतली संकरी नलिका में सतत रहती है। नलिका में सतत रहती है, जिसे ग्रसिका या गुलेट कहते हैं। इसके अंतिम सिरे पर खाद्य धानी का निर्माण होता है। मुख उपकरण में पक्षमाभ यानी सीलिया विन्यास काफ़ी जटिल होता है। इन्हें सीलिया या पक्षमाभों की सहायता से यह भोजन अंतर्ग्रहित करता है। प्रघाण साधारण सीलिया द्वारा अस्तरित होता है, परंतु मुख गुहा में साधारण सीलिया के स्थान पर विशिष्ट सीलिया पाए जाते हैं, जो संयुक्त अंगक का निर्माण करते हैं